So, good evening, ladies and gentlemen. Namaste and a very warm welcome to all of you to the Blub World Web Talks 240th episode. In the last 239 episodes, we have talked to, interacted with more than 4,000 school leaders on this very platform where they've shared their ideas, opinions, innovation, and what all new are they doing in the education space. तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ब्लब वर्ल्ड वेब टॉक्स के 240वें एपिसोड में। पिछले 239 एपिसोड्स में हमने करीबन 4,000 से ज्यादा शिक्षाविदों से बातचीत की और उनसे ये जानने की कोशिश की कि वो शिक्षा को कैसे बदल रहे हैं और शिक्षा उन्हें कैसे बदल रही है। So thank you so much everyone once again for joining us for this session as well. Before we start, just some ground rules for everyone. First and foremost, Blub World Web Talks is a timed platform. So the speaking time is limited and is calculated. So once your speaking time is over, you might get muted. If you get muted, please don't get offended. It's just to keep the activity crisp and entertaining for everyone. Secondly, this is a bilingual platform. So आप अंग्रेजी या हिंदी में से किसी भी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश कीजिए किसी तीसरी का इस्तेमाल ना करें क्योंकि यही दो है जो मैं समझ पाऊंगा। Most importantly, the reason I am telling it again कि आप कोई सी भी भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं is please don't get conscious because of language. जो भी आप कहना चाह रहे हैं वो कहना या वो आइडिया या वो थॉट is far more important than the media or the language that you are opting for. तो आप चाहे अंग्रेजी इस्तेमाल करें चाहे हिंदी इस्तेमाल करें, बस जो भी बातें कहें वो लोगों तक पहुंच जाएं and they become good memories for people. That's all that we want to do in the next 30 minutes that you are here with us. So before we start the session, once again, a very warm welcome. I am Daksh. I am the founder of the Blub World magazine and the World Teen Parliament, which is currently the world's first and the only elected parliament of teenagers on the face of this earth. So today, when we start this session, we're going to talk about something superbly interesting. और वो superbly interesting चीज ये है that how do we really teach teenagers digital citizenship? Now we all understood citizenship, we all understood global citizenship. Now what is this digital citizenship? It's simply all of us as individuals now have multiple personas. Let me invite the first speaker for today's web talk. A very warm welcome to Dr. Neera Sharma, the Managing Director for DAV College Management Committee, New Delhi. Neera ji, over to you for the next 3 minutes. Before we go to you, you come from a legacy that runs multiple schools across the world. आप एक बहुत strong, what I could say, educational pedagogy with a spiritual stint and with a complete different psychological understanding. आप एक ऐसे सेटअप से आती हैं जो बहुत अलग तरीके से एवोल्यूट किया है, बहुत समय तक एग्जिस्ट कर रहा है और शायद जिसने एक समय पे भारत में अपना बोर्ड बनाने के लिए भी भारत सरकार को एप्लीकेशन की थी. You are one of the biggest school chains which is privately operated in India. So a very warm welcome, Neera ji. What's your perspective on when you see so many teenagers? Is digital citizenship really critical? A very warm welcome to you. Over to you, Neera ji. I'd like to start with this thing that we ourselves are actually cyber immigrants. And the children today are cyber natives because they have been born with that mobile in their hands and the genes are tuned to mobile and all the laptops and iPads and whatnot. Whatever the digital footprints are being left by people since the time it has started evolving so fast, the children are picking it up very fast and children are responding also. And as you said, that identity crisis, that may not be so much as you pointed out just now. The crisis may be there, but the children are really very cool in changing from one face to other. They can change their face marks very fast from Instagram to Facebook to LinkedIn, wherever, and they are very quick in picking up. So I'll just share with you that I was taught by my granddaughter only how to make a podcast. And after retirement, I started making a podcast where I spoke stories for little children. And those stories that was Neera Ki Naiya. It is there on Spotify and all these, Ghana and all those apps. And I find that it was so helpful. I narrated my experiences in the form of very small 6-minute stories, and children like them also. So I feel that today the artificial intelligence, whatever apps they are giving us,
And they are even there are programs in which the videos are there in which they teach people how to use those in your daily working and how students can benefit from it. So I find that whatever artificial intelligence is coming up, the schools are guiding the children how to use it carefully and not misuse and not be too much led by their nose into the things they are pointing out. And children are using their minds. I find in DAVs are very particularly careful about this, that children should not be led or rather misled by AI, and they should be using it for their benefit. Thank you very much. थैंक यू सो मच नीरज जी, एंड आपने यू वेरी राइट व्हेन यू से कि शायद वो बच्चों के लिए आइडेंटिटी क्राइसिस इतनी ज्यादा नहीं है, दे कैन स्विच, दे कैन मैनूवर वेरी इजीली, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू लुक एट द काइंड ऑफ विजडम दैट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड इन देम, कि जब आप उन्हें पढ़ाते हुए वो विजडम उन्हें देना चाहते हैं, द प्रॉब्लम विद विजडम इज कि उसको कोई ना कोई एक सेंट्रल पर्सनैलिटी चाहिए और उसी के आसपास आप वो विजडम सिखा पढ़ा पाएंगे. सो व्हेन अ किड who knows artificial intelligence, who is able to use most of the latest tools, is amazingly maneuverable, how do you teach them real values or how do you teach them wisdom? And इसी वजह से we can all see that किसी भी तरीके का वैल्यू एजुकेशन या उनसे कोई भी एक पेशेंस, अगर उन्हें कोई चीज समझनी है या अपना थोड़ा सा समय डिवोट करना है, तो वो बिल्कुल भी नहीं देते हैं. टेंशन स्पैन बहुत छोटा है. किसी भी चीज की मटेरियल वर्थ या इवन स्पिरिचुअल वर्थ, किसी भी चीज की वर्थ उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज विद द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी एडवेंट, दे नो कि हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, एआई है. हमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि एआई है. हमें कुछ शायद जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई ना कोई एआई टूल है जो वो कर देगा. सो आई थिंक that's the perspective that I wanted to put in. But you are very right when you say कि बच्चे जो हैं, they are the natives and we are immigrants. You are very right about that. And हमें इसीलिए कुछ कुछ चीजें जो शायद उतनी बड़ी ना भी हों, वो कुछ ज्यादा बड़ी दिख सकती हैं. Thank you so much, Neera ji. Let me invite the next speaker for today. A very warm welcome to Mr. Paramjit Kumar, the principal of Guru Nanak Dev DAV Public School from Punjab. Paramjit ji, over to you for the next 3 minutes. Please unmute yourself and a very warm welcome. Sir, my perspective is this, that the difference between a citizen and a good citizen is awareness. The students of today, they are tech savvy. They are the native. Definitely they are the native. But then they are not aware of. So the awareness is much required, which the DAV is taking care of, that they are counseling the students by and large and getting the people, those who are in touch with this technology, they are inviting again and again to let the students know. Because if we are not using technology, we are backward. But how to use technology, that is more important. They must learn how to use technology. That is the only opinion we have, that they must be made tech savvy, but using it. It is not that the technology is using our students. And by and large, the technology is using us. एक टाइम था सर जब कहते थे कि कंप्यूटर को इंसान ने बनाया, लेकिन अब लग रहा है कि इंसान कंप्यूटर के अकॉर्डिंगली चल रहा है, which is vice versa. और जो मर्जी कर लें सर, हम जो मर्जी कर लें, after all it is a machine and it is being made by a man, being made by a person. और जब एक पर्सन ने बनाई है तो सर जो आने वाला टाइम है जिसको हम, it is our apprehension, if the students will not be in a position to handle AI in a proper manner, then definitely they are going to be dull and dumb, because they are going to depend upon technology. They are not to depend upon technology, rather they are to improvise upon it, rather they are to think of the new venues which we had never thought when we were students. ये possible हुआ तो everything is possible. वो जो नए venues हैं, those need to be traced out. और वो ड्यूटी बनती है हम प्रिंसिपल्स की, हम टीचर्स की, कि हम उन बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को उन नए वेन्यूज की तरफ पॉइंट आउट करें कि बेटा दिस इज नीड टू बी डन. Day before yesterday, there was a science exhibition in my school. So there was a very beautiful project. Though I'm not a science student, so I don't know the terminology, but उसमें था कि without wires the things are getting charged. तो हम बच्चों से डिस्कस कर रहे थे कि बेटा अगर ये पॉसिबल है तो नाउ तो वी आर हैविंग इलेक्ट्रिक कार्स, और जब इलेक्ट्रिक कार्स चलती हैं तो उनके व्हील्स रोटेट होने ही होने हैं, तो वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होनी ही होनी है, तो व्हाई कांट वी हैव इट
कि अंदर बैठे बैठे ही दूसरी जो बैटरी है वो चार्ज हो जाए, रादर कि हम कहीं जाके अपनी बैटरी चार्ज करवाते हैं या उसको घर में लगाते हैं। तो व्हाई नॉट इट इज कि वो वायरलेस हो और उसकी चार्जिंग हो जाए। Such ideas need to be cultivated amongst the students. And once we'll be on this track, I may tell you, sir, that we'll be definitely entering into the next world, which we have never seen of and never thought of. So these are my submissions regarding this, sir. यस यू आर राइट कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन की तरफ आपको सही सही डायरेक्शंस बच्चों को जरूर देने होंगे, उन्हें और एवेन्यूज देने होंगे। एंड यू वेरी राइट कि बहुत सारी चीजें जो आज हम कर रहे होते हैं हमने कभी इमेजिन नहीं करी थी। एंड एट दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू कोट द नोबल लॉरिएट हु हैज बीन अनाउंस्ड दिस ईयर, जिसको जनरेटिव एआई का फादर कहा जा रहा है। उसका खुद का स्टेटमेंट यही था दैट आई थिंक आई रिग्रेट द इन्वेंशन और द डिस्कवरी दैट आई हैव मेड, बिकॉज वो उसको भी समझ में आ रहा है दैट इट्स समथिंग दैट इज स्लिपिंग आउट ऑफ योर हैंड्स। जब सैम ऑल्टमैन फ्रॉम चैट जीपीटी सेज कि आप जो एआई मॉडल्स अभी देख रहे हैं आज से 3 से 4 साल बाद आपको लगेगा कि हम कितने गंदे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते थे, बिकॉज विद इन द नेक्स्ट 3 and 4 years इज गोइंग वी आर ऑल गोइंग टू सी एन एडवेंट इन एआई जो हमने कभी इमेजिन नहीं किया, विच टिपिकली इज गोइंग बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। एंड इसी वजह से आज का टॉपिक और क्रिटिकल हो जाता है कि आपकी डिजिटल सिटीजनशिप कैसी होगी, बिकॉज बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां शायद ह्यूमन की जगह आप टेक्नोलॉजी से इंटरेक्ट कर रहे होंगे। एंड उस समय आपके विजडम का जो स्टेटस है वही आपका डिसीजन मेकिंग, वही आपका रोजमर्रा का जीवन सब कुछ तय करेगा। सो लेट्स ट्राई टू नो फ्रॉम मोर स्कूल लीडर्स दैट व्हाट डू दे रियली थिंक कि टेक्नोलॉजी के साथ जो टीनेजर है वो वहां भले ही नेटिव है, लेकिन नेटिव होते हुए इज ही और शी रियली इक्विप्ड? क्या उसके पास में वो सारा सेट ऑफ नॉलेज है? ठीक है, ये जरूरी नहीं कि वो सब कुछ जाने, लेकिन एटलीस्ट बेसिक लॉजिक एंड बेसिक गुड एंड बैड समझना बहुत जरूरी है। और इसकी पेडागोजी आई थिंक इज डीपली मिसिंग इन द स्कूल इकोसिस्टम, क्योंकि हमारे पास उसे बहुत सारी सूचना देने के तो तरीके हैं, लेकिन समझ देने के तरीके उतने डेफिनेट नहीं है। हम ये समझते हैं कि हम पढ़ा देंगे तो समझ अपने आप आ जाएगी, बट द प्रॉब्लम इज वो जो अपने आप आने वाला एलिमेंट है वो इतना आसानी से आता नहीं है। So thank you so much, Paramjit ji. Let me invite the next speaker for today. A very warm welcome to Dr. Rajeev Singh Niryal, the principal of Springdale Convent Senior Secondary School from Kangra, Himachal Pradesh. Rajeev ji, over to you for the next 3 minutes and a very warm welcome. So if you agree with me, I think that Corona period will be utilized in the positive way of the students. But definitely, when as a digital citizens, teenagers express themselves by sharing and posting comments, images, and videos. They can explore who they are and take actions on issues they care about. They might do this by engaging in social cause like climate change, joining or creating online communities, or creating contents like videos, memes. Sometimes the anonymity of the internet can be bonus. For example, if teenagers want to explore aspects of their identity or get help with issues they worried or embarrassed about. Finally, the internet gives teenagers access to new and informations, and many turns to internet first to understand themselves and to the world. So the key point of this, the digital citizen teen bill responsible online are the teenagers with social media, online educations, gaming, or other accounts are digital citizens. Responsible digital citizens means taking part in online community life safely, ethically, and respectfully. Responsible citizenship, behave respectfully, protect their reputation and privacy, they think. Behaving lawfully, protecting your privacy and managing your reputations, thinking about how your online activities affect yourself, other people you know, and the wider online community. So in sum up, I just want to say that if we use this digital citizenship, one should use it as a positive manners, not as a negative manners. आपने ये बहुत सही बात कही कि किस तरीके से बच्चों ने बहुत प्लेटफॉर्म्स को, इवन एडल्ट्स ने कोविड पीरियड में किस तरीके से डिफरेंट प्लेटफॉर्म को, टेक्नोलॉजी को यूज किया एजुकेशन को एम्पावर करने के लिए। एंड उसी से उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, उसी से उनकी सिटीजनशिप अभी के लिए डिफाइन हो रही है। एंड आई थिंक एट दिस पॉइंट एक और बात जो है हमें कॉन्वर्सेशन के अंदर लानी चाहिए, दैट एज टीनेजर्स व्हाट डू दे रियली थिंक कि हम जो बातें कर रहे हैं वो सारी बातें उनके लिए एलियन है, या ये बातें डू दे मेक एनी सेंस फॉर देम? Let me ask them a question before I invite the next speaker. So we have Vinayak and Prisha here. So Vinayak and Prisha, I have a simple question for all of you. आपको do you know how to use most of the AI models that you have? Chat GPT हो गया या Google का अपना एक AI bot है. So you know how to use them?
Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. एंड जो हाउ डू यू यूज है, उस हाउ डू यू यूज का आप डिसीजन कैसे करते हो कि अच्छा साहब मैं कहाँ पे ये एआई मॉडल यूज करूंगा और कहाँ पे नहीं करूंगा? Sir, majorly I use AI chatbots to solve my queries regarding the numericals of maths and science, and more also to enhance my speeches. That is being I give it ideas and it makes the speech. So to enhance my speech, the words in it, I use AI for that only. ठीक है, प्रिशा आप किस चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो नॉर्मली इन बॉट्स को? Yes, so I use for similar things, and also like I don't let the AI go over my ideas. So like I propose my idea to AI, so then I just enhance that idea. Like for example, if I have an idea, so then I don't write that create an idea for such and such topic. I write that this is my point of view and this is my idea. Just enhance this. So that's ओके, ठीक है, यू वेरी राइट इन आंसरिंग योर क्वेश्चंस कि आपने उसको अब आइडिया अपना प्रपोज कर दिया है, उससे आपने उस आइडिया को एवोल्यूट करवा लिया. सो लेट मी इनवाइट द नेक्स्ट स्पीकर फॉर टुडे. अ वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर रमन दुआ, द प्रिंसिपल ऑफ माझा पब्लिक स्कूल फ्रॉम तरन तारण, पंजाब. सर, जो टॉपिक आज का आपने डिसाइड किया, दैट्स अ वेरी गुड टॉपिक फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड, टीचिंग टीन्स टू नेविगेट ऑनलाइन वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबली. नो डाउट सर कि बच्चों को हमें बीइंग मतलब हम उनके एल्डर हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, तो हमें ही उन्हें सिखाना है. क्योंकि एआई जितनी मर्जी वास्ट हो जाए, हमारे चाहे छोटे छोटे बच्चों को यूज करनी आ जाए, लेकिन टूल्स को हाथ में पकड़कर सही चलाना है या नहीं चलाना, वो तो शायद एक टीचर ही सही सिखा सकता है. उसी के सिखाने से ही बेटर बच्चा कर सकता है. नो डाउट, नो डाउट. टुडे वर्ड इज ग्लोबल वर्ड. सो टीन्स को इस ऑनलाइन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ये जरूर पता होना चाहिए कि हम जो चीजें यूज कर रहे हैं उसके लिए हम कितने रिसोर्सफुल हैं. बच्चे कई बार क्या होता है, चीज को यूज तो कर लेते हैं लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो नहीं पता चलते. डिजिटली फुटप्रिंट्स कई बार चीजें ऐसी छोड़ जाती हैं जो आपकी पूरी लाइफ को भी स्पॉइल कर सकते हैं. तो आई जस्ट वांट टू से कि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जो हम अपनी मतलब इंफॉर्मेशन पोस्ट कर रहे हैं उसकी प्राइवेसी हमारी कैसी है, कैसी नहीं है, कैसे वर्क कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा, वो सब. सिमिलरली उन्हें मतलब मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो भी कोई मतलब रिकॉग्निशन आनी चाहिए कि हम कोई इन्फॉर्मेशन जो नेट पे आ रही है वो सारी सही नहीं है. कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होती है जो उस टाइम पे मिसलीड कर जाती है बच्चों को, पर बच्चे उसे ही सही समझते हैं. स्क्रीन टाइम का बैलेंस चाहिए होता है कि बच्चों को पेरेंट या टीचर सब जने ये बताएं कि बेटा कुछ टाइम स्क्रीन टाइम्स हैं, तो जो भी आपका डिसाइडेड टाइम है आपके, मतलब वैसे तो जितनी एज है उसके अकॉर्डिंग ही मतलब स्क्रीन टाइम बन जाता है उसका, मतलब 10th पार्ट व्हाटएवर. तो वो बच्चों को उस हिसाब से स्क्रीन टाइम दिया जाए ताकि वो अपनी हेल्दी हैबिट्स को भी जो है वो जनरेट कर पाए, मतलब अपना हेल्दी लाइफस्टाइल भी वो लोग जी पाए. सिमिलरली उनको मतलब हमारी तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से प्रॉपर सपोर्ट मिले, क्योंकि सर सबसे पहले टीचर जो है वो पेरेंट है, उसके बाद स्कूल टीचर्स हैं. तो हमें ये दोनों को, जो ये ट्राइपोलर प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग का, उसमें टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट और बीच में आ जाती है टेक्नोलॉजी, तो उसको बैलेंस करके चलना, ये जब पूरा का पूरा ट्रायंगल सिखाता है तो इसी ट्रायंगल में फिट होके बच्चे जो हैं वो डायमंड बन जाते हैं, पता भी नहीं चलता. तो दैट्स वेरी मच सर, थैंक यू. आपने दो तीन जो अच्छे एनेक्डोट्स मेंशन किए, दैट मेड द कन्वर्सेशन इवन मोर इंटरेस्टिंग. यू आर वेरी राइट कि हम ये बात भूल जाते हैं कि व्हाटएवर वी डू ऑन द इंटरनेट, वेदर वी वांट इट और नॉट, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ अ लेगेसी. आप अपनी पूरा इतिहास लिख के दुनिया के साथ साझा करके छोड़ के जा रहे हैं. आपको नहीं पता किस दिन कौन सी बात कहाँ इस्तेमाल आ जाएगी. आई थिंक मैं जो दोनों टीनेजर्स यहाँ हैं और जो भी टीनेजर्स इस कॉल को सुन रहे हैं, डू रिमेम्बर कि चैट जीपीटी को जब आप अपने मैथ्स प्रॉब्लम्स के लिए यूज कर रहे होते हैं, जब चैट जीपीटी से आप कभी कोई स्पीच लिखवा रहे होते हैं, चैट जीपीटी से अगर आप कभी अपनी स्पेलिंग करेक्शन करवा रहे होते हैं, रिमेम्बर कि वो एआई बॉट जो आपको ये सारे सॉल्यूशंस दे रहा है, वो ये जानता है कि ये बच्चा मैथमेटिक्स अच्छे से नहीं जानता, एंड वो आपका उस समय एक पर्सनैलिटी टाइप बना लेता है. तो वो बॉट इतना इंटेलिजेंट है कि वो आपको तो समझता ही है और आपकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है. जैसे मैंने आज एक छोटा सा बैरियर या छोटा सा डैम आपका खोल दिया कि डू यू टेक रिलेशनशिप एडवाइस फ्रॉम ए एआई बॉट,
तो कोई कुछ करे ना करे, सारे बच्चे आज ये काम जरूर करेंगे जाके कि ये एआई बॉट से ये सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे. द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस इज, आप उससे क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, दिस इज योर चॉइस. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आप कुछ भी जाने आप कुछ भी न जाने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आपकी चॉइसेस की क्वालिटी कितनी अच्छी है, इससे फर्क पड़ता है. एंड आई थिंक हाउ यू चूज इज रियली कॉल्ड विजडम. एंड दिस इज व्हाई वी आर डूइंग दिस कॉन्वर्सेशन कि हम सच में ये डिजिटल सिटीजनशिप किस तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं. So thank you so much, Raman ma'am. Let me invite the next speaker for today. A very warm welcome to Mrs. Shantul Srivastava, principal of Priyadarshini School from Alandi, Pune, Maharashtra. Shantul ma'am, over to you for the next 3 minutes and a very warm welcome. Thanks so much, Mr. Daksh. It was an honor for me to join Blub. This is my first time I'm speaking on this platform, and I'm really appreciating this platform to provide us a platform to talk about it. As the topic given about digital citizenship, so if I'm thinking about the citizenship part only, being a citizen, what we in our country usually we take self-approval from others, right? But if we learn that we don't need self-approval from anyone, then the same applies to the digital citizenship as well. Students today on social media, they are looking for the self-approval, they're looking for their self-image, the confidence building, everything on digital platform by showcasing themselves, putting filters on their faces and saying, we are looking good. And that's good, you can show that, but should not seek for approvals. No, you should know yourself. Teaching a child, building the confidence in themselves, definitely going to help them to understand the sensitivity of using a internet or an online platform. Now here in my school, what we are doing, because we know that AI is growing every day and they are collecting data from us, we are creating a QCT with students, which is called Quality Circle Time. And in that Quality Circle Time, we are just doing a case study. We just take a random case study from internet. There are a lot of information provided. We are asking them, tell us whether you feel it is right or wrong. Once we ask them, they are giving us their thoughts, what they are analyzing from that story, from that case. And usse, the thing came up to us, which we are understanding what is their thought. Once we get their thought, we are able to work on it. Because here the more of psychological part is involved instead of adding the teaching. Because अगर बच्चे को हमने ये समझा दिया कि क्या सही क्या गलत है, तुम्हें समझने की जरूरत है, हमारा आधा पार्ट सॉल्व हो जाता है. और वो करने के लिए हमें साइकोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ती है. तो बच्चे आज के टाइम पे जो वो अप्रूवल ले रहे हैं वो लेना पहले बंद कर देंगे. तो ये समझेंगे कि मुझे, और अनदर चैट जीपीटी ने तो हमारे बच्चों की वोकैबुलरी पूरी खराब कर दी है. आज के टाइम पे अगर मैं चैट जीपीटी हटा दूं तो मेरे आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो वो इतने खतरनाक होंगे कि मुझे उसके बाद अलग से एक टीम बैठा कर चेक कराना पड़ेगा. तो उन्होंने हमारी इंग्लिश खराब कर दी पूरी तरह से. they have stole our ideas, our thinking capabilities, everything. Now students have to understand, as you said कि आपने जो इमोशनल बोला ना रिलेशनशिप एडवाइस लेने के लिए, Alexa is one of it. Alexa, I'm feeling bored, tell me what to do. How can I entertain myself? Another part, just those who are having Apple, Siri. Hi Siri, how are you? I'm feeling bored, I'm feeling alone, help me out. No, we are having AIs who are helping us in this way. I feel the students need to train so that they can use it very carefully. This internet platform, this online platform, this whole web of AI where they're stuck. So making them introducing the real life, using the real life, definitely going to help them. Because what we did, I trained my teacher with the augmented reality. This is one of the apps which actually helped me a lot. So this augmented reality, we started creating videos using the teachers having a earth taking on his head, and she was teaching, and students are very much interested in that topic. And I was like, ma'am, how did you created it? So said, see, we are able to do so. So this is how we can, shift. हम जो AI और ये जितने भी एप्स यूज कर रहे हैं हम उसको इस पार्ट में यूज करेंगे तो बच्चे ज्यादा उसकी तरफ जाएंगे, which I feel कि ये सिटीजनशिप पढ़ाना बच्चों को बहुत जरूरी है. And thank you so much for giving me this platform to speak about it. I'm so glad. Thank you so much, everyone.
Thank you so much for your thoughts. And you're very right when you say, कि हम बहुत बार एलेक्सा से ये एडवाइस ले रहे हैं, फीलिंग लो, व्हाट डू आई डू? एंड इसी वजह से मैंने क्वेश्चन पूछा कि साहब आप रिलेशनशिप एडवाइस ले रहे हैं कि नहीं? एंड अगर हम हमारे घरों के अंदर जो एलेक्सा रखे हैं उनसे बातचीत करेंगे, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा अबाउट यू दैट्स अवेलेबल दैट एलेक्सा ऑलरेडी हैज. तो जब भी आप टेक्नोलॉजी का पीस यूज कर रहे होते हैं, जो आपसे इंटरेक्ट है, जो बातचीत कर रहा है, जो आपको समझ रहा हो, में थोड़ा बहुत एआई है, you are very sure that you are creating your user DNA in their memories. तो वो 100% इस्तेमाल होगा ही होगा because that is free for you. So when something is free for you, you are the product. तो रिमेंबर कि आपकी वो छोटी छोटी चॉइसेस कि मैं क्या चीज एआई बॉट से पूछूंगा और क्या नहीं पूछूंगा, वो फार मोर इम्पोर्टेंट है आपके सवालों से या एआई के जवाबों से. So you're very right when you have choices, Prisha, or you're very right when Vinayak has some choices कि ये बातें मुझे नहीं पूछनी. I would suggest just this abstaining is far more important than any other skill that you might have at the moment. So thank you so much, ma'am. Let me invite the next speaker for today. A very warm welcome to Mr. Nazar Mohammad Khan, the director of Rising Public School from Khurja, Uttar Pradesh. Nazar ji, over to you for the next 3 minutes. आपसे जानना चाहेंगे that when you come from a tier 2, tier 3 city, जब छोटे शहर में बातचीत होती है तो हम वहां सिटीजनशिप नहीं पढ़ा पा रहे, डिजिटल सिटीजनशिप कैसे पढ़ाएंगे? और वहां पे क्या पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, क्योंकि साथ एआई बॉट्स तो हैं, टेक्नोलॉजी तो पहुंच गई है, लेकिन क्या उसको इस्तेमाल करने की समझ हम दे पा रहे हैं? Over to you, Nazar sir. A very warm welcome. Thank you very much. A very good evening to all the learned members present in this meet. And I'm also thankful to the organizers of the Blub for including my name. It is an honor to be with you all. Now, this topic, and when you very rightly said for a small place, you indicated to me, yes, since I have been in the corporate world and I took the education at a very later stage, my idea is that teaching profession is a noble profession and that needs a connect, a sentimental connect and emotional contact and a human contact between the pupil and the teacher. There should not be much of this gadget, the electronics. That yes, for information's sake, for something, gadgets are needed, these latest, but we cannot depend on that. You very rightly said in the chat GPT, I met a lot of people, I take interviews, and when I see their draft of letters, they are so wonderfully drafted. But when I speak to them, they are absolutely rubbish. They cannot speak a single word. Then I inquired from them that how did you draft this letter? They said we contacted GPT and then we went through that. So my problem is that I don't really, I teach a lot of classes. You know, my favorite, it has become my hobby at this stage that I really teach the children and see that how they can speak the language. ना मेरी ख्वाहिश तो ये होती है कि बच्चों को हम सिर्फ उतना ही नेट सेवी बनाएं जितना कि रिक्वायरमेंट है. इनको और चीजों में तो वो ओवर ग्रो कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई में दे आर नॉट ग्रोइंग. So this is my simple, my idea of it is that we should look after this. And the parents and the teachers can play a very important role in this. Or ये आप लोग भी, this is not a business. You know, when you go on net, that means you are going for a business. You are going to earn money. But profession, teaching profession is not only earning money. It is helping generate a society. People. What class of people we are going to create? मैं देखता हूँ मेरे बचपन में स्पेलिंग बच्चों की जो थी 75% बच्चे एक क्लास के अंदर उनको स्पेलिंग बहुत अच्छी तरह से आती थी वर्ड की. आजकल मैं देखता हूँ 7% बच्चों की तो स्पेलिंग ठीक है, रेस्ट ऑल दे डोंट नो. They are hardly able to pronounce. They are hardly able to read. I think I have made my point clear. I have taken a lot of time. So thank you very much. थैंक यू सो मच नजर सर. आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेंशन कर दी कि जब लोगों के सीवीज आ रहे होते हैं फॉर जॉब एप्लीकेशंस, देयर एप्लीकेशंस लुक प्रिस्टीन, दे लुक आउट ऑफ द वर्ल्ड कि ये क्या मतलब किस इंडिविजुअल को हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं. एंड व्हेन वी डू द इंटरव्यू वी आर डम्बफाउंडेड. हमें समझ में नहीं आता कि यार ये चिट्ठी लिखने वाला और ये इंटरव्यू में आने वाला क्या ये दोनों एक ही व्यक्ति है या ये दो अलग अलग लोग हैं. एंड आई थिंक इसी जगह पे वो अगेन बिकम्स अ पॉइंट दैट हम इतने सारे पर्सोनास बिल्ड कर रहे हैं
कि हमें कहीं मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर ना हो जाए आगे आने वाली जनरेशन को, कि वो समझ सूझ से दूर हो जाए कि यार what we really are. I think before I actually invite both of the teenagers to speak, I have some questions for them. Prisha or Vinayak, since you are teenagers, I am not treating you like a guinea pig. Don't feel that. I have a lot of respect for both of you. But हाँ, मुझे एक सवाल आपसे जरूर पूछना है. इतने सारे लोगों ने इतनी सारी बातचीत की जिसमें एक बात रिपीट हुई बार बार कि लैंग्वेज डिटीरियोरेट हो गई. एंड डू यू एज टीनेजर्स रियली थिंक कि क्या हमें अब सच में जरूरत है स्पेलिंग सीखने की? क्या हमें सच में अब जरूरत है ग्रामर की? क्योंकि जब चैट जीपीटी पर्पस सॉल्व कर दे रहा है तो क्या हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए, या हमें इसको किसी और डायरेक्शन में लगाना चाहिए? Because the way the world is evolving, do we really need spellings when chat GPT can do it? Do we really need a grammar? What do you think on it? Vinayak, what's your thought on it? Sir, my point of view on this is that learning, remembering the spellings makes the mind more conscious and makes our mind more intelligent upon remembering more things. If we'll depend everything on computer, we'll store everything on through AI. We'll ask anytime that what is the spelling of this. Then what is the role of our mind in this? We are not developing our mind by using the AI every time, and because of this, in the future, innovations would only depend upon AI, and the human innovations will be deteriorated. One human innovation of AI will result in the end of the whole world. ठीक है, तो यू थिंक कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस है कि स्पेलिंग हमें आनी चाहिए. प्रिशा, व्हाट्स योर थॉट ऑन इट कि ये Yes, स्पेलिंग और ग्रामर पे क्या इतना एफर्ट चाहिए? yes, sir, that's true. Like AI is not developed by AI. AI is being developed by human intelligence only. So I believe that yes, we should put focus on spelling and grammar. It's our language, and we should improve it day by day. And also, developing AI is not like that AI is being developed by human only, so that human should be educated enough to develop a good model of AI. So you're very right when you say this, and what I'm trying to say is everyone has a persona. मैं भी जब इस स्क्रीन पे बोल रहा हूँ तो I am actually presenting a persona. बट जब मैं अकेला बैठा हूँ, आसपास कोई नहीं है और मेरे पास एक डिवाइस है, मैं तब जो हूँ is what you have to really understand. हर बच्चे को समझना होगा कि आपकी वो अकेले की persona कौन सी है, कि जब आपको कोई नहीं देख रहा है, कोई आपसे कुछ पूछ नहीं रहा है, कोई आपसे कुछ समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, तब आप अपने आप को कैसे देख रहे हैं. This is where you'll become far more, intelligent, far more versatile than any AI model that can ever be generated. क्योंकि ये सब वही लोग कर पाए जो अपने साथ बहुत सारा समय बिता पा रहे थे. Only they could ideate. Just go back and read the story of any Nobel laureate in the history. आपको हर एक के जीवन में एक बहुत बड़ा ऐसा समय मिलेगा जो उसने अपने साथ बिताया है, जब उसके पास कोई नहीं था, when there was a lot of loneliness around them. I'm not telling that become a loner, but I'm telling find out time to evaluate yourself. Introspection का समय निकालिए. So thank you so much. I think नजर सर वापस साथ उठा रहे, but I'll try to come back to you. अभी actually दोनों बच्चों की speech बाकी है. So let me invite the next speaker for today, and then we'll try to come back to you, sir. A very warm welcome to Ms. Prisha Saraf, who's currently a member of Parliament in the WLT in Parliament from grade 9 from Ryan International School, Sona Road, Gurgaon. Prisha, over to you for the next 3 minutes at the Blub Web Talks. A very warm welcome. Thank you so much, sir. Greetings, everyone. Myself, Prisha Saraf, a teen MP in the 3rd World Teen Parliament, trying to present my perspective to all of you. In today's world where technology has become an inseparable part of our lives, being online is as normal as going to school. Let's face it, being online is a massive part of our lives, whether it's scrolling through social media, binge watching shows, or researching for school. The digital world is where we spend a lot of time. But with this constant online presence comes something we all need to think about: digital citizenship. Today, I want to talk about why it's crucial for us as teens to learn how to navigate the online world responsibly. We've all heard how the internet gives us freedom, right? Freedom to express ourselves, connect with people, and share ideas. But with that freedom comes responsibility. And let's be real, sometimes it's easy to forget that our online actions have real repercussions. What we do, say, and share online matters. First, let's talk about privacy. We live in a world of oversharing.
strong passwords, enabling privacy settings. These aren't just for tech nerds, they're for anyone who want to protect themselves online. Then there's the issue of respect. We all know how easy is it to say something behind a screen that we never say to someone's face. This is how cyberbullying starts, and we've all seen the damage it can do. Being a responsible digital citizen means treating everyone with respect, even when we're not face to face. And when we see something that's not okay, whether it's bullying or hate speech, it's our responsibility to speak up or report it. Doing nothing makes us part of the problem. Another big part of digital citizenship is thinking critically. The internet is an endless sea of information, but not all of it is accurate or trustworthy. Fake news and scams are everywhere, and it's up to us to figure out what's real. Instead of just believing everything we see on Instagram or Twitter, we need to question the sources. We've got to stop spreading false informations and rumors just because it's sensational or fits our narrative. Finally, let's talk about balance. We've all fallen into the rabbit hole of endless scrolling, binge watching, or mindlessly checking our phones. But being a responsible digital citizen also means knowing when to disconnect. We need to set limits so that we're not just living online, but also experiencing life in the real world. It's about finding that balance between our digital life and our actual life. In the end, being a digital citizen isn't about being perfect online. It's about making conscious choices, protecting our privacy, being respectful, thinking critically, and balancing our online and actual worlds. Thank you so much. Thank you so much, Prisha, for your thoughts. I think you very well encapsulated what has to be done when we talk of digital citizenship. Thank you so much. A very warm welcome to Mr. Vinayak Gupta, who's currently the Member of Parliament of the Third World in Parliament. He's from grade 10 from Bhavan Vidyalay, Panchkula, Haryana. Vinayak, over to you for the next 3 minutes and a very warm welcome. The way of future is digital world. Let us have enough courage to face it bold. Namaste everyone. I am Vinayak Gupta and Member of Parliament at 3rd WTP and 10th grader from Bhavan Vidyalay, Panchkula, Haryana. In today's time, digital world has become a center or a hub of all the knowledge which is in this world. Be it from students to teachers, all use it to solve their queries, be updated to the latest news headlines, etc. Focusing on students, especially teens, it has become a cause of concern also. Not only students solve their queries, but they also search for things like entertainment videos, knowledgeable videos, mind-relaxing videos. As you all know, how much stress we teens have for our studies, friendly relations, and of course, our looks and the image that we have in the front of others. And nevertheless, digital connection has become a daily process. Hence, we should be aware of the know-how of the technology. In short, we must become the best digital citizen as much as we regard ourselves as the citizen of our own nation. For this, ethical and responsible usage of digital devices like mobile phones, laptops, desktops, etc. Is required. These devices, I would say, is the world's largest nation since all the people are connected to it and follow the same protocols. Now all are connected, so some bad, unethical, and mischievous people will also be connected with us. So we must be digitally secure, safe, and most importantly, digitally literate to handle this all. These all things are already known to most teens. But the major problem comes here. The nature of the curiosity to explore more, though it's a little good to an extent only. If we navigate through the internet continuously, we might end up directly or indirectly relating or connecting ourselves to those people who might want our loss in terms of monetary or in terms of mentally. That is where actually malware, cyberbullying, and cyber phishing comes. Now that we are done with the harmful causes, but how to save them? Most probably by firewalls or to purchase heavy costed anti-malware softwares. But more important than this is to learn how to be respectful and responsible enough to not make someone downgraded by posting or replying to them badly. In end, I would like to say, be digitally aware, be mentally spare, and be enough debonair. Thank you. Thank you so much, Vinayak. I think you actually gave the right conclusion to this complete talk. When we started with digital citizenship, I think everyone should realize at this point of time that दुनिया में जितने भी देश सबसे बड़े देश in geographical territory, सबसे बड़े देश in population, in demographics, or whatever, if you really imagine mobile phones to be a country,
That's the biggest nation that's following the same set of rules. And the problem is, भले ही हमें पता हो ना हो, उस देश को ये पता है कि उसके सारे सिटीजन्स कैसे कैसे हैं, कैसे एग्जिस्ट करते हैं, और हर एक का यूजर डीएनए किस तरीके का है. So we have to be cautious because digital citizenship is something that must be taught. It's not an option anymore because the problem is हम ऐसे जगह के सिटीजन हैं जहां हम रियलाइज भी नहीं करते कि ये सच में एक देश है. Thank you so much everyone for being a part of the Blub Web Talks. This was the 240th episode. I hope you enjoyed. If you did, and if you want to attend the future sessions, open your audio, say a big yes, and have an amazing evening ahead. Namaste. Thank you so much everyone. I hope to see you and more such people share their ideas, thoughts, innovations at the Blub Web Talks. Thank you everyone. Namaste.